Assalamu alaikum students. Today we are going to continue with the same topic, reflections on the reawakening East. In previous lecture I explained you about industrialism and its importance. Today I will explain about cultural uniformity and why Bertrand Russell was against it. Cultural uniformity is impossible in Asia. This is the heading which I have given for this paragraph. It is of course a trifle absurd to speak of Asia as in unity. Bertrand Russell is saying that it is totally stupid idea or useless idea, odd idea that we should talk about Asia as a unity. And only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. And why is saying that? Because after Western imperialism, the people of Asia realized that they are so different from each other. And this is the basic reason, the Western imperialism which made them realize that they are different. Asia contains half the population of the world and at least three very distinct civilizations, that of Islam, that of India and that of China, exist here. He says that Asia contains half the population of the world. एशिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी दुनिया की आधी कैलकुलेटेड होती है. और फिर वो कहते हैं कि इस्लाम, चाइना और इंडिया यानी कि हिंदुज़म यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. ये तीनों डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशंस हैं. दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर जस्ट एज मच एज दे डिफर फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन. वो आपस में इतने ही डिफरेंट हैं जैसे कि वो क्रिश्चियनिटी से डिफरेंट है. दैट मीन्स चाइना के अंदर जो मज़हब है, द रिलीजन दे फॉलो, द कल्चर दे फॉलो इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ क्रिश्चियनिटी. एंड सेम इज़ इट विद हिंदू इन इंडिया एंड सेम इज़ विद मुस्लिम्स एंड इस्लाम. So, how could you expect all of these people to live together in a unison? There could be no unity among Asian nations. These differ from each other just as much as differ from the civilization of Christian, and there is not the faintest reason to expect them all to act in unison. That means कि कोई ऐसी reason बताइए कि वो लोग एक साथ चलें. दे हैव डिफरेंट रिलीजन टू फॉलो, कल्चर भी डिफरेंट है, रहने का तरीका सब कुछ अलग है. वाई शुड दे फॉलो वन? ऐसा हो ही नहीं सकता. वॉट इज़ टू बी होप्ड इज नॉट एन एंडेवर आफ्टर कल्चरल पोलिटिकल यूनिटी. ही इज सेइंग दैट व्हाट कुड बी होप फर्दर देन. एक एफर्ट इसकी तरफ तो बनानी नहीं चाहिए. That means they should not put any attempt or make an effort to have the cultural or political unity in Asia. यूरोप में हो सकता है, यूरोप में क्रिश्चियनिटी है और यूरोप के सारे नेशंस क्रिश्चियनिटी के अंडर हैं, तो वो एक यूनिटी या यूनिशन बना सकते हैं. अमेरिका में भी यही चीज़ पॉसिबल हो सकती है और है भी, बट एशिया में नहीं हो सकती. एशिया में तीन डिफरेंट मज़हब हैं. They can't live together, they can't have any unity together. But a determination to uphold independence at home and to respect it elsewhere. What could be done is that to determine yourself to uphold your independence at home. अपना इख्तियार, अपनी independence को बरकरार रखें and respect it. आप अपनी अगर respect करते हैं अपनी ideology की और अपनी nation की, that is also required for others. यानी अपनी भी आप अपनी बना के रखें, अपनी कल्चर, अपना मज़हब आप उसको फॉलो करें, अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखें, बट यू शुड एक्चुअली हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर नेशंस इन दिस रिस्पेक्ट एज वेल. एंड व्हेन आई स्पीक ऑफ इंडिपेंडेंस, आई एम नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ पॉलिटिक्स बट ऑल्सो ऑफ कल्चर. ही मेड इट क्लियर दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिटिक्स और political ideology. But he says that culture-wise he is also talking about it. That culture is different, politics in the countries are different, they can't go together. What they can do is that they can have their own and respect others. There is a great danger of too much cultural uniformity. No great civilization has ever been cosmopolitan. This is the new idea. What is cosmopolitan? I will explain it further. But here Bertrand Russell says that there is a great danger of too much cultural uniformity. Uniformity is a word which is come from uniform.
all of the students have a uniform when they enter college. यानी हर स्टूडेंट का यूनिफॉर्म के साथ एक लेबल, एक कलर, एक ड्रेसिंग कोड है. सब बराबर दिखते हैं उस यूनिफॉर्म में. ऐसे ही आर्मीज़ में होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. जहाँ पे सबको बराबर करना होता है वहाँ पे यूनिफॉर्म आ जाती है. तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आप ऐसे समझें कि अगर आप इसी तरह से चीज़ कल्चर पे लगा दें, यानी कि सारी एशिया में एक ही कल्चर फॉलो किया जाए, एक ही तरह का खाना खाया जाए, एक ही तरह के त्यौहार बनाए जाएं, एक ही तरह का मज़हब फॉलो किया जाए, इसको कहते हैं कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हो जाना. यानी सब एक जैसे ही बनते चले जाएं. दैट इज़ द डेंजर विच बर्नार्ड रसेल इज़ टॉकिंग अबाउट. And why is talking about it? Because he knows that the cosmopolitanism or cosmopolitan cities are becoming, bigger than any other thing in the world. They are mushrooming. उसके बारे में हम बात करते हैं कि cosmopolitan cities में क्या चीज़ कॉमन है और वो क्यों बर्नार्ड रसेल को लगता है कि ये इनकी वजह से कल्चरल यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी दुनिया में. This is the picture explaining the culture of China. The art, the festivities, the building, the food, all of it is unique in its own form. It's all Chinese. This is the culture, typical culture of India, and you can see that they have their own way of festivities. The dances are different, the way they pray to God is different. Their Buddhas and there are many gods in India, and one picture is over here of their one god. There are festivities, culture, color, food, everything is different in India. Then how you can go together with China or Muslims? This is our culture, the glorious Muslim culture. We have the book which we follow, Quran. We know how we pray. We have festivities like Eid. Our architecture is so unique and different from others. See the arches which are always in the mosque, the gatherings at the mosque, the praying method is so different. So these three countries have their own original culture and values. They can't be together. They can't live together. They can live together in a secular state, but they can't become, one with everything. Cosmopolitanism. Modern cosmopolitanism is based upon science and machinery. These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvents that they tend to put an end not only to what was bad, but also to what was good in the culture of the past. So, modern cosmopolitanism is based upon science and machinery. कॉस्मोपोलिटन सिटीज़ या कॉस्मोपोलिटिज्म को उसको कहा जाता है कि जब सिटीज़ और कंट्रीज़ जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी और मशीनरी को अपनी सिटीज़ में इवॉल्व करना शुरू कर दें. your cities become bigger, grander. They are mega cities with high architecture, buildings बड़ी हैं और everything is going electronic, machinery का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, science हर जगह नज़र आती है, and with that makes your life easier. Yes, but this is what is happening all over the world in the major cities now. These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures and have shown themselves such powerful solvents that they tend to put an end to not what was bad, but also to what was good in the culture of the past. वो ये कहते हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इसने पुराने तहजीब और पुराने कल्चर्स को वाइप आउट सा कर दिए. जो चीज़ें आप पहले जिस तरह से करते थे, नाउ विद द टेक्नोलॉजी यू आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे. फॉर एग्जांपल, once people used to use the bicycle to move from one place to another, but with the technology of cars and the machines and all that, they can do it faster. Then
uh, previously, this is the one of our cultural habit that we used to visit neighbors and we used to visit people of our relatives and all. But today what we are doing, we have these smartphones in our hands and we can actually communicate. This, look, the lecture, the way I'm delivering, it is one of the most modern method. It is not the previous old method of teaching. So this is what he's talking about, that these are solvents. Solvent is a thing which absorbs, which dilutes the things which are mixed in it. So the technology, the machinery and the science is absorbing the old culture in it, और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है. और इसमें हो क्या रहा है कि जो चीज़ एक तरह से बुरी थी, बुरी तो नहीं कह सकते, बट लेट्स फिगर इट आउट दैट द थिंग्स विच वर यूजलेस एंड टीडियस, यानी कि जो मुश्किल थी वो आसान कर दी साइंस ने. एक जगह ये हो रहा है. बट what was good and valuable in culture, like meeting, have gatherings, have sports or outdoor sports and all that with friends and all, this was good. But with the culture of machinery, with the smart technology, we are forgetting all about it. So it is also taking the good and the bad of the society in it. वो दोनों चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करता जा रहा है. It must be admitted that they are necessary and that they are good if rightly controlled, but it need not be admitted that adulation, that means admiration of that or worship of that thing, of them, should sweep away everything else. So obvious the comment he has given, that it is to admit कि ये सब कुछ फ़ायदेमंद है, it is all necessary in our life, लेकिन इसका एक बैलेंस होना चाहिए. अगर ये बैलेंस नहीं होगा and we are worshipping all the time this machinery thing, then we are going to lose a lot. If human life is to be tolerable, it cannot be wholly mechanized. यानी कि अगर बर्दाश्त करने वाली human life बनानी है, something which is reasonable to live, something which is tolerable to live, it cannot be wholly mechanized. वो पूरी मशीनरी या मशीनी ज़िंदगी बन नहीं सकती. It must continue to contain poetry and music and art and love and simple joys of life. This is the part which he wants to actually make a point out of it, that in all this life of machinery in the cosmopolitan city, we should not forget that poetry, the music and the art, which are the simple joys of life, which give us relief from this technology and this burden of mechanization and all that and science. ये चीज़ें कल्चर का पार्ट हैं जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती हैं, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन. पोइट्री सुनना, म्यूज़िक, आर्ट, इट्स ऑल कल्चरल. ये आपको अपने कल्चर में इन्वॉल्व रखती हैं, ये आपको अपने कल्चर की याद दिलाती हैं. खाना पीना और पोइट्री सुनना, म्यूज़िक करना या छोटे छोटे ऐसे काम करना जिससे ज़िंदगी का पता चलता है कि आप इस तरह से गुजारते हैं. दैट्स पार्ट ऑफ योर कल्चर. इट मेक्स ह्यूमन लाइफ मोर पॉसिबल एंड रीजनेबल एंड टॉलरेबल. There are the things that tend to be forgotten in machine age. They are forgotten in the communist philosophy. And then he says these are the things that tend to be forgotten in machine age. यही सारी चीज़ें जो हैं एक मशीनी ज़िंदगी में भुला दी जाती हैं. यानी अब if you're working like a machine and you're using all the machinery, smart technologies everywhere in this city, in the world, then you're forgetting about your own music, art and culture. यानी आप कल्चर अपना खो देते हैं उसमें. और वो ये कहते हैं बर्ट्रैंड रसल कि यही चीज़ जो है मशीन एज में डिज़ोल्व हो चुकी है, भुला चुकी है. और कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी में भी हमें ये चीज़ नज़र आई थी. अब तो कम्युनिस्ट का दौर नहीं है, बट कम्युनिस्ट और कम्युनिज़म में ये चीज़ सबसे ज़्यादा टारगेट की गई थी. एज आई टोल्ड यू दैट कम्युनिस्ट वॉज द वंस हु गवर्न देयर पीपल बाय फोर्स, यानी अपनी फोर्स लगा के हुकूमत चलाते थे. तो जब गवर्नमेंट को पैसा कमाना है तो फिर वो इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया क्यों करेगी. वो लोगों को पोइट्री, म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर जिससे कुछ पैसा नहीं मिलता, जिससे कोई रेवेन्यू डेवलप नहीं होता, उसकी तरफ वो लोगों को जाने नहीं देती थी. और वो कहते थे कि जस्ट वर्क एंड वर्क एंड वर्क एंड प्रोड्यूस समथिंग फॉर द गवर्नमेंट. सो दिस इज़ द कम्युनिस्ट फिलॉसफी.
और उन्होंने इस चीज़ को एंटरटेन नहीं किया, जबकि ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है. all this cultural factor, and they are not given sufficient weight by many men who think themselves in the forefront of progress. और फिर बर्नार्ड रसल बहुत ऑब्वियस सी बात करते हैं कि जो दुनिया में आगे तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, द पीपल हु आर रनिंग हैव दिस रेस ऑफ progressing fast and fast and fast, and they are leading this progress, they don't consider these values very important. उनके नज़र में इसका कोई वज़न नहीं है. ये कल्चर या अपना त्यौहार, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर वो इस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि वो मशीन जो है वो आगे ज़िंदगी में गुजारना है, तो इन चीज़ों को साइड पे रखो और काम करो और मशीन की तरह बन जाओ और काम करते रहो. दैट इज़ व्हाट द पीपल हु आर इन द प्रोग्रेस रेस, they think like that. So Bertrand Russell made it clear that the people who are themselves in the forefront of progress don't value culture. This is the cosmopolitan city of New York, and it explains that look at the big building and the architecture and the technology which you can see in this picture. If you see the second picture, you will see the same thing. This is of Paris, and again the tall buildings, the high architecture, the technology is visible in the buildings and all this setup. Again, there are different pictures of the different city with the same setup, almost like it. This is Amsterdam, famous European city which is famous for its beauty, but you can see the architecture so similar. All the tall buildings, the beauty they have given to the city is with all these tall buildings, and they are making it more. And all of the last three pictures and this one are similar. This is Dubai, and this is again the same picture of technology, of high-rise buildings, of mega city structure. So I just selected these 4 pictures of the cosmopolitan cities in the world. There are many more like Singapore, Bangkok, and many others which are following the same trend. This is called cosmopolitanism. This is what Bertrand Russell was talking about, that everyone will become same if they try to follow this trend of machinery and science. But at the same time, when it is necessary, we should never forget about our own culture and should value it and cherish it and practice it. This is for today. Thank you.